Hello guys, welcome back to the channel of Legal Ledger. So in this video we are going to discuss a latest Supreme Court judgment which discusses the concept of master of the suit. That is also the concept of Dominus Litis. The name of the case is Nak Engineering Company versus Tarun Keshari Chand Shah. This is the latest judgment of 2026. So let us discuss by decoding the Supreme Court's 2026 reaffirmation of Dominus Litis and the boundaries of the impleadment. So if we before going into the case, we are going to discuss what is the basic concept of Dominus Litis. So Dominus Litis is often the plaintiff in the case. So plaintiff is the person who brings the case to the court, right? So also he is the master of the suit. He institutes the suit on his basis. So what does he do? He includes the defendant as party. Like, I want to execute my right over these persons, so include them as a party in the suit. So this is in the hand of the master of the suit, also known as plaintiff. So whenever he institutes a suit, it is expected from him to include every party against which he wants to claim the right. And therefore, it is said that the boundaries of impleadment should be kept in mind while instituting the suit. So what does impleadment here means? That is inclusion of party in a suit. Inclusion of party. So, as we have discussed what Dominus Litis means, who is Dominus Litis, plaintiff is Dominus Litis, right? And what is impleadment? So, let us proceed with the understanding of the case. Now, it will be easier for you to understand the case because now you have understood the topic of impleadment and Dominus Litis. So, what was the story? Before going into the story, let us explain the concept of the master of the suit with the help of this slide. So here is the plaintiff, right? He is the center of the suit and he is there to command the boat. Because he is the hero of the suit, we can say the plaintiff commands the boat, and all the third parties which are going to be impacted by the decision of the case are out of these box, and they have their own reason because plaintiff has instituted the suit. He is the main center of the suit, and every other party except the plaintiff cannot be said to be the Dominus Litis. In this case, Honorable Justices Pankaj Mittal and the other justice also highlighted that the litigants who have instituted the suit are Dominus Litis, and it is for them to choose their adversaries, which also means that a plaintiff cannot be compelled to add a party to defend a suit against their wishes. The parameter of the litigation is set entirely by the initiator. So whoever initiates the suit, it is in his hand to add whatever party he wants to add in the case. And earlier in the slide also we have discussed that adding a party often means the impleadment process. So by power of impleadment, plaintiff chooses against who he wants to institute the suit. Moving ahead, the risk and reward dichotomy of the control. Let us discuss in detail. Like plaintiff, also known as Dominus Litis, we have understood that. Now he has absolute autonomy as well, and he has absolute liability as well. So what does absolute autonomy means? The plaintiff alone designs the litigation strategy and selects the adversaries. Third parties have no inherent right to force entry. If any third party, as we have discussed, want to enter into the suit which is instituted by the initiator, also known as plaintiff and Dominus Litis, he cannot force plaintiff to add him as a party to the suit, or in the other words can we say that he cannot force the process of impleadment. Now, because the autonomy is with the plaintiff, that he chooses who enters the suit, there is an absolute liability also. So it is the absolute liability of the plaintiff as well. If he does not include the proper and the necessary parties to his suit, then it will be very risky for him, because there is reward also of absolute autonomy, but there is risk involved of absolute liability as well. Because if we understand the concept of necessary and proper party, we will get to know that without necessary party, any decree will be redundant. It will not get enforced. Why? Because necessary parties have their rights so embedded in the suit that if they want, they can challenge the decree and get the decree nullified. So the importance of necessary party has been understood in detail. Now I will also cover the difference of the necessary party and the proper party. Let us go to that slide first. So the procedural hierarchy, if we define the party status in any given civil suit, then we will say that there are
two parties, necessary party and the proper party. And the interloper is also is a person who wants to intervene in the suit in between. He is neither a proper party nor a necessary party, but wants to enter into the suit by the process of impleadment. Like, I want to get inside the suit despite the fact that I am not necessary party and also not a proper party. So, is relief claimed against them? The necessary party, yes. The proper party, rarely, because they have their right involved indirectly in the suit. The proper party is not directly affected by the judgment of the court in any given suit, but yes, necessary party is highly affected. And therefore, in the previous slide also I have discussed that if the necessary party is not included in the suit and the decree is passed, the necessary party can alone get the decree nullified. So, who is interloper? Whether any relief is claimed against him? The answer is no. The final decree directly bind the interloper? No. Bind the proper party? No. But absolutely yes in the case of necessary parties. Do the necessary party or the proper party or the interloper exist to assist the court's adjudication? In the case of interloper, it is a no. And for the proper party, it is a yes. It helps in assisting the court to arrive at a proper decision because their rights are not directly involved in the suit, yes, but they assist the court to better determine the issue in the case. So, in the case of necessary party, it depends. Can they enforce the impleadment against? Now moving ahead in the video, let us come to the facts of the case. So there was a premises that is the Churchgate house. So इसमें क्या हुआ था that there was a original owner and a primary lessee, sublessee / licensee and the appellant. So who is the appellant in the given case? Appellant वो है जिसने ये अपील लगाई है कि आप मेरे को रिस्पोंडेंट की तरह ऐड कर लो, ठीक है. बट हेयर द कोर्ट एम्फसाइज दैट द मास्टर ऑफ द सूट इज प्लेंटिफ, है ना. The master of the suit is plaintiff and appellant has no relation to the case at all. तो जब plaintiff फाइल करता है, फ्रेमिंग ऑफ द सूट का ऑर्डर नंबर 1 आप जाके पढ़िएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि आप या तो नेसेसरी पार्टी हो या आप प्रॉपर पार्टी हो. अगर आपका किसी भी केस से कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप अपने आप को कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते. सो द स्टेप 1 विच कोर्ट फॉलोड इन दिस केस वॉज द नोटिस वॉज सर्व्ड अपॉन द सोल डिफेंडेंट बट दे फेल टू अपीयर. द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्टेड. इन्हें हमने रिस्पोंडेंट को हमने नोटिस दिया था, है ना, बट वो नहीं पहुंचा. और उसके बाद क्या हुआ कि वो फेल टू अपीयर हो गए. उसके बाद क्या हुआ, नैक इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इम्प्लीडमेंट एज अ डिफेंडेंट फाइल करने की कोशिश की. उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो सक्सेसर हैं, हमें एंड में ये जो है ये बिल्डिंग मिलने वाली है, तो हमारा हक बनता है कि आप हमें इस केस में ऐड करें, है ना. जो भी इस बिल्डिंग से रिलेटेड केस हो रहा है उसमें आप हमें ऐड करें. बट ये पता लगा कि वो ये क्लेम कर ही नहीं पाए कि वो कॉर्पोरेट सक्सेसर सच में है भी या नहीं, क्योंकि कोई कंक्लूसिव प्रूफ ही नहीं था सक्सेशन का, विच फर्दर लेट द रिवर्सल. सो द ट्रायल कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हेयर मीन्स द ट्रायल कोर्ट. जहाँ पे भी आपको देखिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब ट्रायल कोर्ट होता है. उसने परमिट कर दिया था इम्प्लीडमेंट नैक इंजीनियरिंग का, बट हाई कोर्ट ने इमीडिएटली रिवर्स कर दिया और कहा कि नैक इंजीनियरिंग ना तो प्रॉपर पार्टी है ना नेसेसरी पार्टी है, ठीक है. अब इसमें क्या आर्ग्यूमेंट लिए गए? बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोसीजरल लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब होता है आलस, राइट. इसके बाद क्या है कि उन्हें नॉलेज तो एक्वायर हो गई थी नैक इंजीनियरिंग को, बट उन्होंने 9 साल बाद इम्प्लीडमेंट लगाया, इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन लगाया. क्या आपके हिसाब से वैलिड है? कमेंट सेक्शन में बताना. बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक्सट्रीम डिले देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है और इम्प्लीडमेंट नैक इंजीनियरिंग कंपनी का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आप ये बताइए, नैक इंजीनियरिंग को हमने नोटिस दिया था, वो रिस्पोंडेंट है इस केस में, ठीक है, बट उसने कुछ नहीं करा और 9 साल बाद आके कहता है कि प्लीज़ मुझे इम्प्लीड कर दो डिफेंडेंट की तरह, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? 9 साल की डिले क्या कम होती है? तो इसीलिए अपीलेंट की फाइनली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई एंड द सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर बाय रिजेक्टिंग द इम्प्लीडमेंट बाय द नैक इंजीनियरिंग एज अ डिफेंडेंट इन द केस. Moving ahead, the boundaries of judicial influence.
Now, how the decree finally affects the proper party and the necessary party. अगर हम इसको ध्यान से समझें तो हमें पता लगेगा that the decree is strictly binding on the plaintiffs and respondent 3. That is, जब डिग्री पास होती है ना तो उसका इफेक्ट नेसेसरी पार्टी में मैक्सिमम पड़ता है, ठीक है, नेसेसरी पार्टी पे मैक्सिमम पड़ता है ना. एंड अगर कोई थर्ड पार्टी के राइट अफेक्ट होते हैं तो हम फिर उसको कंसिडर कर सकते हैं. सेफ हार्बर मतलब कि एक सेफेस्ट अप्रोच है कि अगर कोई अपने आप को इम्प्लीमेंट करा रहा है तो डेफिनेटली वो डिग्री से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होगा. बट इन दिस प्रेजेंट केस द नैक इंजीनियरिंग कंपनी हैड नो इंटरेस्ट इन द केस एज अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, और इसीलिए अपेलेंट यहाँ पे इस बाउंड्री वॉल के बाहर स्टैंड करते हुए अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाने की कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो प्रॉपर पार्टी है ना वो नेसेसरी पार्टी है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो प्रूफ किया था नैक इंजीनियरिंग के कि इस केस में वो इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि आगे चल के वो सक्सेसर की तरह इस कंपनी, जो ये बिल्डिंग हमने अभी डिस्कस की थी, ये वाली बिल्डिंग का जो केस था उसको हमने डिस्कस किया था, इसमें वो इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि आगे चल के ना सक्सेशन में उसको ये क्लेम होने वाली है. तो उसने यही प्ले ली और क्या दिया एविडेंस के रूप में कि भाई आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लीजिए कंपनीज एक्ट के अंदर. बट व्हाट वाज एक्चुअली मिसिंग, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इज दैट देयर वाज अ इल्यूजन ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेशन, व्हिच मीन्स दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट नैक इंजीनियरिंग कंपनी हैड शोन द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट वाज मेयरली सजेस्टिंग दैट इट वाज अ परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी का नेचर बता रही थी, ये कहीं से नहीं बताया कि वो उस बिल्डिंग को सक्सेशन के लिए लेना चाहती है या उसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ था. तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में अपीलेंट का इस केस से कोई रिश्ता नहीं है, हेंस इट कैन नॉट बी इम्प्लीटेड एज अ पार्टी. वेन एवर देयर इज अ इम्प्लीडमेंट सो देयर इज अ डुअल बर्डन ऑफ इट, विच मीन्स कि आपको ये प्रूफ करना था, नैक इंजीनियरिंग कंपनी को ये प्रूफ करना चाहिए था कि भाई अनडिनाइबली डायरेक्ट अजम्पशन है कि स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़ हम पे ही आनी थी, बट नैक ने उसको फेल कर दिया. दूसरी बात कि प्रोसीजरल नेसेसिटी क्या होता है कि भाई प्रूविंग दैट ultimate decree will actively infringe upon the rights, making your presence as a necessary party to prevent the miscarriage of justice, which the NAC status failed. How come NAC failed to prove that it was actually a necessary party or not? और नेसेसरी पार्टी है तो ये डिक्री का डायरेक्ट इफेक्ट खत्म किया जा सकता है. और मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि प्रॉपर पार्टी केवल एडजुडिकेशन करने के लिए सहायता कर सकती है आपकी, पर नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर तो फेटल ही कर देता है सूट को. Failing both the gateways renders the High Court refusal of impleadment legally unassessable. मतलब नैक को respondent ना बनाना is the best thing because it failed to prove that it was neither the necessary party nor the proper party, and hence the master of the suit is plaintiff. And with this, the NAC Engineering Company versus Tarun K. Sri Chand Shah 2026, the latest judgment on the Supreme Court upon the issue of necessary party and the proper party and the impleadment of any party in the suit in general, was discussed in the latest judgment. For more latest judgment like this, follow Legal Ledger. Please like, share and subscribe and follow for more content like this.